Today we are going to start with the lower respiratory tract disorders, which will include all the disorders that affect our respiratory organs lower than the pharynx, that is from larynx to the alveoli. Okay? So the first disorder that we are going to study in this, it is the pneumonia. Now, what is pneumonia? It is basically the inflammation of alveolar wall and the presence of fluid and pus in the alveolar sac of one or both the lungs. क्या होता है कि आपका जो लंग का में एल्व्यूला है, उसका जो वॉल है, एपिथेलियल वॉल है, इट स्टार्ट्स टू बिकम स्वोलन, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। और आफ्टर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन उसमें फ्लूइड आ जाता है, पस लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, जो कि आपकी एल्व्यूलाई का जो सैक होता है, इट ऑक्यूपाइज दैट, ठीक है। नाउ द निमोनिया कैन अफेक्ट वन लंग और बोथ द लंग्स depending on the infection के whether usually जो viral infections होते हैं उसमें दोनों lungs affected होते हैं, तो it depends on the pathogenic cause, ठीक है, on the pathogen. Now about 7% of population is affected by the pneumonia, so it is a very common condition and it affects a very large number of people. अब इसकी जो causes है वो there are about there are 30 types of pneumonia depending on different types of causes, so there are multiple causes of pneumonia, ठीक है। अब वो causes कौन से, they are basically of different types depending on कि किस किस्म का organism इसको cause कर रहा है, ठीक है। तो उस basis पे there are about 30 types of pneumonia. Now the first cause is bacteria, ठीक है। When the pneumonia is caused by the bacteria, it is called as the bacterial pneumonia. अब इसमें जो the most common bacteria that causes the pneumonia, it is the Streptococcus pneumonia. Name is given to that, Streptococcus pneumonia. अब जो आपके पास 80% बैक्टीरियल निमोनिया है, वो निमोनिया जो कि बैक्टीरिया से कॉज होता है, so about 80% of it is caused by this Streptococcus pneumonia, ठीक है। It's a gram positive cocci बैक्टीरिया, राउंडेड होता है, चेन की शक्ल में they are present, ठीक है। Another bacteria is the Haemophilus influenza. This was the first cellular organism that whose complete genome genetic study इस पे की गई थी, ठीक है, और ये genetics की study में काफी important है, लेकिन it can cause pneumonia, bacterial pneumonia. Another bacteria that causes pneumonia is the Legionella pneumophila, ठीक है, and then we have the Staphylococcus aureus. ये जो Staphylococcus aureus है बच्चे, ये nasal area में it is considered as a normal organism in the nasal region. ये almost 95 or more than that of the population, 95% or more than that of the population उनमें present होता है normally. लेकिन when the immunity weakens या कोई और वजह होती है, इनका number increase हो जाता है and then they become infective and they cause harm to the organism. So when that situation happens, some of them Staphylococcus aureus की जो species है, ये आप में pneumonia भी cause कर सकता है. Another bacteria is the Mycoplasma pneumonia, ठीक है, ये भी आपके पास it is a causative agent, bacterial agent that can cause pneumonia. अब बैक्टीरिया में क्या होता है, I had told you earlier कि they cause inflammation, they release toxins, उससे पस होती है, infection होती है, ठीक है। तो when the fluid ये आपके पास alveoli में accumulate होता है, तो as a result उसकी जो gaseous exchange की capacity है वो reduce हो जाती है, ठीक है, surface area reduce हो जाता है, तो आप में जो gaseous exchange है वो भी reduce हो जाता है, and as a result there are different symptoms that appear in an organism which we will study later on in this topic. Now another cause or another factor that organism that causes pneumonia are the viruses, ठीक है, और उनको हम कहते हैं viral pneumonia. अब इसमें से कौन कौन से वायरसेस हैं, ये फ्लू वायरस, दैट इज द इन्फ्लुएंजा, ठीक है,
फिर आपके पास राइनो वायरस है विच कॉजेज द कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मल जो सर्दी हो जाती है, जुकाम सा, ठीक है। फिर आपके पास देयर इज अनदर वायरस कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। ये वायरल निमोनिया जो होता है इट इज वेरी कंटेजियस। कंटेजियस मीन्स ये बहुत आसानी से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द बैक्टीरियल निमोनिया। ये कोविड-19 इज कंसिडर्ड एज अ वायरल निमोनिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इट कैन स्प्रेड एंड इट इज सिवियर देन द बैक्टीरियल निमोनिया इन सर्टेन केसेस, ठीक है। कुछ कुछ में ये जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो ज्यादा सिवियर हो, सॉरी वायरल निमोनिया इज मोर सिवियर। फिर आपके पास फंगल निमोनिया आता है, उसमें कौन कौन से पंजा है? इट इज नीमोसिस्टिस, क्रिप्टोकोकस एंड हिस्टोप्लाज्म। ये जीनस में जो आपके पास पंजाए होंगे वो आपके पास निमोनिया कॉज करेंगे एंड इट इज आल्सो वेरी कंटेजियस, ठीक है। ये भी आपके पास बहुत कंटेजियस है, मींस के इट कैन इजीली स्प्रेड और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स, तीनों के सिम्टम्स मोर और लेस सेम है, ठीक है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन देम। कफ होगा बिकॉज द लंग्स आर अफेक्टेड, ठीक है। ये डायग्राम में देखें, दीज आर द नॉर्मल एल्वियोलाई, यहाँ पे ये इसमें फ्लूइड जमा हो गया है, ठीक है। सो द सरफेस एरिया रिड्यूसेस फॉर द गैसियस एक्सचेंज। एक्सक्यूज मी। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स, सिंस इट इज अ डिजीज ऑफ द लंग्स, तो आप में जो कफ है वो होगा, मींस खांसी होगी। फिर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन होगी, तो फीवर इज देयर, चिल वो शिवरिंग सी होती है फीवर के साथ, ठीक है। चेस्ट पेन, जिसको हम प्लूरेटिक पेन भी कहते हैं, मींस के अब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई है, प्रेशर आता है, तो इट कॉजेज चेस्ट पेन। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑक्सीजन का एक्सचेंज ठीक से नहीं होता, तो देयर इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी। हार्ट बीट फास्ट होती है टू पंप इनफ ऑक्सीजन, जो कि कम है ऑलरेडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, जिससे आप में फटीग और वीकनेस शुरू हो जाती है, ठीक है। साइनोसिस इज बेसिकली एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिटीज है, जैसे जहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा है, जैसे फिंगर्स है, लिप्स है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा है, लिप्स है, टिप ऑफ द नोज है, ठीक है, चीक्स है, ये आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि ब्लड में कम है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, और ये जो एरियाज है ये आपके पास दे अपीयर ब्लूइश, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बोला था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट हैज अ वेरी डार्क कलर, ठीक है। एंड व्हेन यू लुक एट द वेन्स ऑन योर स्किन दे अपीयर ब्लू because of the very dark color. Symbolically we consider it as blue. So when the carbon dioxide is more, so these areas with rich blood supply they appear blue as well. Usko hum cyanosis bolte hain, theek hai। Now if it is not treated, if pneumonia is not treated on time, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं विच आर वेरी हार्ड टू ट्रीट एंड समटाइम्स दे कैन नॉट बी ट्रीटेड। उनमें आपके पास द फर्स्ट वन इज प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या है कि जो एल्वियोलाई में आपके पास फ्लूइड है, इट ऑल्सो एल्वियोलाई बर्स्ट और आपके लंग के इर्द गिर्द जो प्लूरल कैविटी है उसमें यहाँ पे आपके पास फ्लूइड जमा होने लगता है। द फ्लूइड इंक्रीजेस तो वो लंग्स आपके पास मतलब प्रेशर होता है, एंड सेकेंडली द फ्लूइड स्टॉप्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। देन इट इज द एम्फाइमा, जो कि आपके पास जब ये फ्लूइड एल्वियोलाई बर्स्ट करते हैं तो उसमें फ्लूइड भी होता है एंड पस भी। सो द पस आल्सो व्हेन इट कम्स आउट इनटू द प्लूरल कैविटी इट कॉजेस अ कॉम्प्लिकेशन व्हिच इज कॉल्ड एज द एम्फाइमा। देन वी हैव द हाइपोनेट्रीमिया। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो सोडियम कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, सोडियम आयंस का। गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, वहां पे सोडियम भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वो सोडियम आयंस आपके पास इट दे रिड्यूसेस इन द ब्लड। उससे आपके पास व्हाट हैपेंस इज दैट द किडनी फेलियर अकर्स।
ठीक है. And when kidney failure occurs, a person can die as well. Abscess is basically pus, presence of pus anywhere in the body. So आपकी lungs में आपके पास pus भी मौजूद हो सकता है, which is a complication, which requires very high dose of antibiotics to be treated. अब आपके पास वैक्सीन्स जो है वो आपके पास 23 स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए अवेलेबल है. पीपल यूज दैट एज अ प्रिवेंटिव मेजर. ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं, जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है विच आर द टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकोल. जो पेनिसिलिन है बेसिकली ये वो certain sometimes people are resistant to it, ठीक है, या allergic to penicillin, तो वो उस केसेस में फिर दे टेक टेट्रासाइक्लिन या क्लोरामफेनिकोल. ठीक है. So this was about pneumonia. Now we are going to start with since we have time, we'll start with the tuberculosis. Now tuberculosis, basically it is a binary word. Tuber means nodules while closis means formation. ठीक है. यहाँ पे closis का जो meaning है, the meaning here is the formation. अब what is tuberculosis? It is basically the presence or the formation of nodules within the lungs. Alveoli में आपके पास nodule formation होती है और उसको हम बोलते हैं tuberculosis. Now it is a highly contagious bacterial disease. ठीक है. Contagious means it can easily spread from one person to another person. ठीक है. And it is caused by a bacterium. Causative agent हमारे पास क्या है? Mycobacterium tuberculosis. अब ये जो nodules form होते हैं, so they damage the lungs. Now this Mycobacterium tuberculosis, the causative agent of tuberculosis, this was discovered in 1882 by Robert Koch. Robert Koch is called as the father of bacteriology. Okay? So he discovered this Mycobacterium tuberculosis in 1882. Now the shape of this bacteria is bacillus, rod shape. ठीक है. ये आपके पास lung को भी affect करता है majorly. The major type of और मेजर जो हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, इट इज द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस व्हिच हैपेंस और व्हिच अफेक्ट्स द लंग्स. लेकिन दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैन आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. जिसमें से आपके पास 15% अदर पार्ट्स इंक्लूडेड है. 85% केसेस में इट अफेक्ट्स द लंग, व्हाइल इन 15% केसेस इट अफेक्ट्स अदर पार्ट्स. अब कौन से? इट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. ठीक है. आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको इट कैन कॉज टीबी इन दैट. इट कैन आल्सो कॉज टीबी ऑफ द जॉइंट्स. ठीक है. या बोन्स, व्हिच इज वेरी सिवियर बेसिकली. एक्सक्यूज मी. Now coming to the mechanism, that how do they cause the infection, or how does the the nodules appear in the lungs? What happens is when the bacteria moves through the droplets in air into the nasal cavity. ठीक है. From there it reaches the lungs और वहां से it enters the alveolar walls. Alveoli का जो epithelium है या wall है उसमें ये enter हो जाते हैं. अब वहां पे आपके पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है. ठीक है. What these macrophages do, they engulf them. वो उनको they engulf them, वो उनको निगल लेते हैं, उनको इर्द गिर्द पहले सराउंड करते हैं and then they उसको अपनी बॉडी में ले लेते हैं. ठीक है. Phagocytosis कर लेते हैं. Now what the macrophages, they are basically the defense mechanism, right? So what, instead of killing them, in certain cases of weak immunity, these bacteria take over the cellular machinery. Means कि वो आपके पास जो macrophages का cell है, it becomes under the control of these bacteria. ठीक है. जो infected macrophages है, we also call as the phagosomes यहाँ पे. ठीक है. They are called as the infected macrophages or phagosomes. So instead of killing the bacteria, which happens during weak immunity, this bacteria takes over the cellular machinery. Okay? In that case,
the immune system becomes active. Okay, so when the immune system becomes active, the T lymphocytes reach that site. वो वहां पे पहुंच जाते हैं, T lymphocytes वहां पे आ जाते हैं कि here we are needed, right? So they come to the alveolar epithelium. Now the T lymphocytes will cannot kill the bacteria because they are present inside the macrophages. Okay, and they cannot act against the cells of their own body. They act against the foreign bodies, but the foreign organism is enveloped or is hiding within the macrophages. Okay, so what happens is कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स है और मैक्रोफेजेस हैं या इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस या फैगोसोम्स हैं, इनके इर्द गिर्द एक कवर सा बन जाता है, ठीक है, एक एनवेलप सा बन जाता है, एक सराउंडिंग सी बन जाती है ऑफ कोलेजन एंड फिब्रिनोजन प्रोटीन। इस कवर को या ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है अराउंड द मैक्रोफेज, ठीक है, तो इस पूरे, let me show you in diagram this this is called as the granuloma। कि ये आपके पास मैक्रोफेजेस थे, इसमें ये रेड कलर, दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक है, एंड when the T lymphocytes come around it, वहां पे they cannot kill it, ठीक है, so since they cannot kill it, a protein layer surrounds it, ठीक है। अब वो जो proteins है fibrinogen and collagen, they form an envelope or around them, and this is called as the granuloma formation। ये granuloma है आपके पास, this structure is called as the granuloma, ठीक है। अब ये जो granuloma है, इसके अंदर ये ग्रैन्युलोमा अगर आप एक्सरे में देखें तो इट अपीयर्स एज नोड्यूल्स विद इन द लंग्स, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। अब इसमें ये जो बैक्टीरिया है, इट कैन स्टे साइलेंट और डॉर्मेंट एंड इट विल नॉट डिवाइड फर्दर, इट विल नॉट बिकम एक्टिव, ठीक है, ये इसके अंदर रह सकता है फॉर डेकेड्स, ठीक है, फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम until the immune system becomes weak, they become active। वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं एंड व्हेन दे बिकम एक्टिव दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। वहां पे इनका नंबर ज्यादा हो जाता है। व्हेन देयर नंबर इंक्रीजेस विद इन द एल्वेलर सेल्स, तो ये जो ग्रैन्युलोमा है ये रप्चर हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, एंड द बैक्टीरिया कम्स आउट। व्हेन इट कम्स आउट इट गोज टू अदर सेल्स एंड दे इन्फेक्ट अदर सेल्स, और उसमें भी द सेम प्रोसेस रिपीट्स, ठीक है। अब ये जब बैक्टीरिया का नंबर इन द लंग्स इंक्रीज हो जाता है, तो द सच पीपल व्हेन दे एक्सहेल आउट एयर, व्हेन दे ब्रीथ आउट, this bacteria can come out with it and can infect other individuals as well if they are in close contact। तो वो जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसफर हो सकता है to another person or a healthy individual। That is why we call this as a highly contagious bacterial disease। It can be easily passed to other individual। Now look at this, this bacteria, यहाँ से this person was infected, ठीक है, so he bred out these bacteria to this individual। अब यहाँ पे इसके lungs में आपके पास it infected the one macrophage, then more macrophages, ठीक है, so as a result the T lymphocytes or the immune system became active, the T lymphocytes came to this site, ठीक है, यहाँ पे फिर around this the fibrinogen and the collagen protein formed an envelope, formed a covering around it, this resulted in the formation of granuloma, ठीक है। Now the bacteria was dormant or silent if the immune system was strong, ठीक है, if the immune system is not strong it will not remain silent, it will become active। However, if the immune system is strong it will remain silent, ठीक है। Now when the immune system became weak, so these bacteria became active and they divided and redivided within the granuloma। As a result the granuloma
ruptured, burst हो गया, and it went on to affect other parts or the other cells within the lungs, ठीक है. और इसी तरह it can spread to all parts of the body, कि पहले सारे lungs affect किए, then it can spread to other organs, ठीक है. So it can be like this, the mechanism is like this. Now coming to the risk factors, that what helps these helps this infection, or what factors causes us to get this infection more. The first one is the weakened immunity. I just told you that people with weak immunity, unme aapke paas ye jo bacteria, it will not remain silent, it will not remain dormant, it will become active and actively cause infection. So this is basically an opportunistic bacteria, ठीक है. इसको opportunity मिलती है, अगर इसको opportunity मिलती है किसी weak person में कि ये बंदा weak है immune system wise, तो it will attack that person, ठीक है. फिर आपके पास HIV infection में भी immunity weak हो जाती है, the person is physically weak, so it can also become a risk factor for the tuberculosis. फिर लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के इसकी वजह से क्या होता है कि they do not eat properly, ठीक है. They do not follow proper hygiene, they do not have they have close contact with people. वो लोग जो कि फाइनेंशियली और सोशली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो they do not they have closed spaces. जगह आपके पास क्लोज होती है, at in one house there are 10, 11, 15 people living, ठीक है. तो वो उनका अगर उसमें से एक बंदे को भी one person gets infection, तो he can easily transfer it to the others, ठीक है. Secondly, because of less finance with them, they do not eat properly, उनके पास खाने को इतनी healthy चीजें नहीं होती, so their immune system is weak, so these bacteria can easily attack on them. And the third factor in this is that because of low socio-economic condition, उनमें hygiene practices भी कम होते हैं. You have seen people in villages, they do not follow the proper hygiene that we are used to following, ठीक है. The fourth one is the alcoholism. People who drink alcohol are weak, उनके lungs weak होते हैं आपके पास, so these bacteria can easily affect them. Crowded conditions, I just explained. Healthcare workers, excuse me, the healthcare workers, they basically are the doctors, the nurses, all these people working in the hospitals. So because they have जिस तरह अभी COVID का, they are more prone to getting the COVID-19 infection because उनका exposure ज़्यादा है. So ये जो healthcare workers है, इनका exposure ज़्यादा होता है towards such pathogenic organisms or pathogenic conditions, so they can get the infection easily and they can further transfer it as well. If one individual is infected, he can transfer it to 50, 60 or even more people, because during a day he checks or visits such high number of people, okay? Now coming to the pulmonary TB, the TB that is, or the tuberculosis that occurs in the lungs. अभी आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक आपके पास जब बैक्टीरिया लेटेंट होता है तो उसको हम लेटेंट टीबी बोलते हैं, जो कि आपके पास बैक्टीरिया है वो डॉर्मेंट रहता है, साइलेंट रहता है, तो उसको हम लेटेंट टीबी बोलते हैं. After initial infection, 90% chances are the bacteria will go into dormancy and result in asymptomatic TB and remain dormant for several decades. के the moment जो first आपका exposure है towards this bacteria, ठीक है, तो वो there are 90% chances कि वो active नहीं रहेगा, वो dormant हो जाएगा, silent हो जाएगा within the immune system, within your body, ठीक है. तो उसमें आपके पास you have asymptomatic TB means there are no symptoms, ठीक है. उस TB में आपके पास symptoms नहीं होंगे because the bacteria is silent, it is not active, it is not actively affecting your lungs, ठीक है. And it can stay that way for several decades. Decades is a span of 10 years, so it can stay like that for decades. So when your age increases or when your immune system becomes weak, so then it can cause or it can become
active, and that is called the active stage in which the granuloma bursts. ये अब आपके पास 10% chances हैं कि people who are affected by the pneumonia, the TB, so there are 10% chances that it will be active stage because of weak immunity. Now coming to the symptoms, again it is an infection of the lungs or disease of the lung. So it will have chronic cough for काफी long time के लिए उनकी coughing होगी, chest pain होगा, there will be cyanosis. I just explained that, weakness and hemoptysis. It is blood comes out when you're coughing, usually like that. और सलाइवा में आपके पास ब्लड होता है, ठीक है, व्हेन दे आर कफिंग तो उसमें ब्लड निकलता है. नाउ द ट्रीटमेंट, इसमें आपके पास कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज होती है, मींस के अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टुगेदर, ठीक है. एक्सक्यूज मी, कौन से हैं? इट इज द आइसोनियासिड एंड रिफेम्पिन, ये आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं. एंड वी कैन आल्सो यूज द pyrazinamide and ethambutol. अच्छा, अब प्रिवेंशन में आपके पास, यू कैन प्रिवेंट दिस. आप इफ यू रिकॉल, आई जस्ट टोल्ड यू कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें क्या है कि हाइजीनिक एनवायरनमेंट अगर ना हो, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो, तो दैट मीन्स कि इफ पर्सन इज फॉलोइंग हाइजीनिक रूल्स, के प्रॉपर हाइजीन के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो देर आर चांसेस दैट दिस इन्फेक्शन कैन नॉट अकर. अब अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट दिस कंडीशन. तो वो इम्यूनिटी कैन बी स्ट्रांग बाय यूजिंग और बाय ईटिंग हेल्दी फूड एंड ऑल्सो अवॉइडिंग coming in close contact with patient who has been diagnosed with TB. ठीक है, जब आपको पता है कि this person has TB, so you should avoid coming in close contact with such individual. Vaccine is BCG, जो कि बच्चों को दी जाती है. BCG stands for Bacillus calmate and Guerin. ठीक है, ये आपके पास, this is the name of the vaccine. So that's about it. That's for today's lecture. Thank you.